95 रुपीज़ आपके ना उसमें चले जाएंगे आपके वॉलेट में डाल देंगे, ऐसा ही। तो ये है कि बहुत ही शुरू में बहुत सस्ता था, फिर महंगा कर दिया, लेकिन अब तो मेरे हिसाब से सही है। अब ड्राइवर इनके नाम से एप्लीकेशन है, वो कह रहे हैं कि आप तय कर लो आपस में, मतलब आप डिस्काउंट कर बलून से कम करवा नहीं, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना, मैं इतनी दूंगा, मैं इतनी दूंगी, वो कहते हैं रक्शे वाला हिसाब किताब। हाँ, लेकिन होगा एप्लीकेशन से, आपको कनेक्ट ड्राइवर एप्लीकेशन से करेगा, आप अपनी अमाउंट बता दो कि आप कितने देना चाह रहे हैं। मैं समझ गई, मतलब जैसे लोकली आप जाते हो, कोई रक्षा पकड़ते हो, उससे बातचीत करते हो, वो कहता है इतने बनते हैं, फिर आप अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप है तो सब कुछ है। इतनी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 मुंबई स्टार्टअप्स। अच्छा, मुंबई को मुंबई कहते हैं? मुंबई कहते हैं, मुंबई। ओके, तो आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 मुंबई स्टार्टअप्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मुंबई स्टार्टअप्स। सो स्टार्ट करते हैं। It's just one of those cities, you know? Some people love it, some people hate it, but when it comes to startups, you got to respect Mumbai. It's the financial capital of India, the fashion capital of India, the entertainment capital of India, and it's a really tough city to live and work in. The hustle culture, the competition. I mean, if you can make it in Mumbai, you can probably make it just about anywhere else. And in Startup Genome's Global Startup Ecosystem Report of 2021, Mumbai ranked #1 globally out of 100 emerging ecosystems, outperforming all of them in terms of performance, funding, experience, and talent. And the city is home to upwards of 10,000 startups, according to the Government of India's Startup India portal. And while of course we won't get a chance to talk about all of them in this video, we'll at least talk about 10, the top 10 Mumbai startups, coming up right after this. Starting things off at number 10, we have omni-channel furniture marketplace Pepperfry. The startup was founded by two former eBay employees, Amrish Murthy and Ashish Shah, back in 2011 as Strength Sutra Platform Services. And this was way before IKEA entered India. It was even before Amazon.in or homegrown startups like LiveSpace, Urban Ladder, WakeFit. I mean, Pepperfry was pretty early to the online furniture space. But in 2012, after they launched the site, they actually weren't just focusing on furniture. They were also selling home decor and clothes, jewelry, perfume, cosmetics. I mean, they were closer in competition to e-commerce websites like Flipkart and Snapdeal at that time. And Nykaa wouldn't be founded until later in the year, so the online beauty market was also still in a pretty nascent stage as well. Basically, Pepperfry was taking a very horizontal approach. They were offering a lot of different products, but this actually wasn't benefiting them financially. Their customers were happy, but they realized pretty early on that if they were going to succeed as a startup, they were going to need to focus on one product category, and that category ended up being furniture/home decor. This was in early 2013, and by the end of 2014, they'd already opened their first offline location, Pepperfry Studio in Mumbai. Today, they've expanded their offline retail presence to 41 locations across 22 cities, and their investors have poured $285.3 million into the company at a valuation of $462 million during their Series F round in February of 2020. Next up at number 9, we have neobank startup Jupiter. So Jupiter was started by Jitendra Gupta, whose first big startup success was fintech startup CitrusPay. He was acqui-hired by PayU when they bought CitrusPay for $130 million, and after his time as PayU's managing director came to an end in 2019, Jitendra hinted in a tweet that his next startup, of course, was going to be a fintech company. And this tweet became a reality when he started Jupiter that same year. So as a neobank, Jupiter is 100% digital. They don't have any offline locations, there's no offline interview or application process involving physical documents. It's all totally online. And the way that they're able to do this is they partnered with an RBI licensed bank called Federal Bank to offer their customers legitimate bank accounts. And with these bank accounts, they're able to offer products like Jupiter Edge, which is a sort of buy now, pay later credit hybrid, a salary advance account, and of course, a traditional debit card as well. And that's about as offline as Jupiter gets, really. Those little pieces of plastic. Now, Jupiter wouldn't have been able to do all this without the financial support
support that they've received from their investors, who so far have poured $155 million into the company at a valuation of $711 million back in December of 2021. And they're going to be using these funds to keep making their totally online bank as compelling and as exciting as possible for new and existing customers. Moving into number 8, we have instant grocery delivery startup Zepto. So a lot of people don't realize this, but Adit Palicha and Kaivalya Vora actually grew up in Dubai, but they usually visit India twice a year to see their grandparents, and it was during their school days in Dubai that they got into entrepreneurship with the launch of a startup called GoPool. For this fledgling company, they actually got a grant from a government-owned Emirati bank called Emirates MBD worth about 10 lakh rupees, and GoPool of course didn't take off, but Adit and Kaivalya still had that entrepreneurial itch. They wanted to build something new, and so when they were forced to make a choice between attending their first semester of computer science at Stanford online from India and delaying their joining to start a new company, well, they chose the latter. But they didn't immediately begin with Zepto. Instead, their second startup was called Kirana Cart, a Mumbai-based grocery delivery startup that partnered with Kiranas to deliver items to customers. But they quickly realized that being the middleman between Kiranas and customers just wasn't a scalable model. Instead, they decided to replace Kiranas. They would stock items themselves, and instead of picking things up from Kiranas, delivery drivers would pick things up from dark stores. With this pivot, they decided to shut Kirana Cart down in March of 2021 and replaced it with Zepto in April of 2021, the 10-minute or less grocery delivery service that has expanded now out of Mumbai and into all of the metros of India minus Ahmedabad. At the time of me filming this video, Zepto is a soonicorn. They were last valued at $900 million back in May of 2022, and their investors have poured $360 million into the company so far so that they can continue to expand their offerings. One example of this is Zepto Cafe. In April of 2022, a year after launching Zepto, they entered a new category, fresh snack delivery. By partnering with restaurants and cafes like Blue Tokai, Chayos, Guru Kripa Snacks, and Sassy Teaspoon, they've been able to deliver break time foods like tea, coffee, and samosas on demand. Coming to number 7 now, we have omni-channel beauty startup Purple. Now, a lot of people don't realize this, but Purple actually entered India's beauty and cosmetic space before Nykaa. The company was incorporated in 2011 as Monash Lifestyle Private Limited by 3 IITians, Manish Taneja, Rahul Dash, and Suyash Katyayani. And the reason that they got into the beauty space is the same as Nykaa. They saw it as a massive opportunity. See, beauty products are relatively inexpensive to produce, but they sell at very high prices. And what's more, in the early teens, the penetration of Western-style beauty products in India wasn't very deep. There was a lot of untapped market potential. Now, you might be wondering what differentiates Purple from Nykaa, besides the fact that Nykaa is public and Purple is private, and Nykaa is founded by a woman and Purple is founded by men. Well, one of the biggest differences is that Nykaa follows an inventory model. They sell directly to consumers from their own inventory, meaning that they buy the products of other brands and then sell them, or alternatively, they sell their own private label products under the Nykaa name. And they've been allowed to do this because of their Indian ownership. A majority of the company is Indian owned, and so they're allowed to have an inventory-led model. Purple, though, doesn't have this luxury. They have to follow a marketplace model, where they act as a middleman between sellers and buyers. This also means that if they want to sell private label products under the Purple name or any other private label that they have, then they have to sell these products to vendors who can then sell them to consumers via the Purple marketplace. So it's a B2B2C approach here. And that's why even if you buy a Purple product on the Purple website, the product is actually being sold by a third party, not Purple directly. In spite of this limitation though, which is a result of a majority of the company being owned by foreign investors, Purple has managed to thrive. They have over 600 foreign and Indian brands on their marketplace and were last valued at $1.1 billion in June of 2022, making them a unicorn. Oh, and their investors have poured $296.3 million into the company so far. Next up at number 6, we have edtech startup Lead School. Started by Smita Diora and Sumit Mehta back in 2012, Lead School takes an interesting approach to edtech. Rather than trying to replace schools or offer extracurricular coaching or tutoring the way a lot of other edtech platforms do, Lead School is actually a B2B SaaS play. When a school signs up with Lead, they gain access to Lead's international standard curriculum, their back-end SaaS systems which allow faculty to manage things like admissions, students, classrooms, and grades, all from a single online platform. There's also a gamified homework
system that feels very similar to something that you'd find offered by, for example, Byju's. Then you've got smart TVs with audio-visual lessons to keep kids interested in the classroom. And then, of course, the secret sauce here, the way that Lead is actually able to make money, is that these offerings, this school upgrade system that they have, actually brings in a lot of extra revenue for the school because parents want to send their kids to Lead-powered schools. And so even though Lead School's business model charges schools based on the number of students that they have per year, the school ends up seeing a worthwhile ROI for this investment in the long run. They've got upwards of 3,500 schools signed up with them in more than 400 cities, and in 2022, they achieved a valuation of $1.1 billion, making them the third startup unicorn of the year. So far, their investors have poured $166 million into the company so that they can continue to transform schools in India and also expand internationally. Moving into number 5, we have insurtech startup Akko. Now, Akko's story actually begins all the way back in 2007 when Varun Dua and Ruchi Deepak met while working for American investment firm Franklin Templeton Investments. Varun would end up leaving the company the following year and beginning his entrepreneurial journey in 2010 with the launch of Glitterbug Technologies. Now, this was just a software design company based in Mumbai, but many of their clients were insurance companies, ICICI Prudential, Tata AIG Life, and Aviva Life Insurance. Building software and websites for these companies made Varun realize that while India's big insurance providers dominated the offline market, they still hadn't figured out how to go online. That's why they were reaching out to Glitterbug. And so he decided that instead of helping them to build their own individual websites and platforms, he was going to instead build a marketplace where insurers could find customers and customers could find insurers. This platform is called CoverFox, and it's actually still around. They have over 40 insurers on this marketplace, and it was while Varun was building CoverFox that he and Ruchi reconnected. In 2014, she quit her job at Matrix Partners and joined CoverFox as an advisor. And this is normally where the story would have ended. Things were going well, CoverFox was a successful company, but Varun and Ruchi couldn't help but notice that there were still gaps in India's insurance space. They had built a marketplace, yes, but the insurers on that marketplace were still the same old traditional companies that Indians had been buying insurance from for years. So in 2016, Varun and Ruchi launched Akko, a new insurance provider that would make the process of buying and claiming insurance fast, easy, and affordable. They got a license to sell insurance in 2017, and today they've sold car, taxi, bike, and health insurance to 50 million unique customers. So far, their investors have poured $458 million into the company at a valuation of $1.1 billion in October of 2021, making Akko an insurtech unicorn. Coming in at number 4 now, we have another edtech startup, Upgrad. Back in 2014, Mayank Kumar was managing the investment arm of Bertelsmann India, and while he was helping them to invest in a number of sectors, the one that really caught his attention was India's edtech space, because after helping Bertelsmann make a couple of edtech investments, he realized that a lot of these companies were focusing on the K-12 space. Very few of them were focusing on higher education. So Mayank decided that this was going to be the space that he was going to target. He onboarded 3 co-founders, Falgun Kompally, Ravi Chugh, and Ronnie Scruola, and started Upgrad in March of 2015. Now, VCs tend to follow trends. There are very few investors out there who want to be the first to take a risk on a new idea. So a lot of Upgrad's funding in the early days, because they were such a new idea, came out of the pockets of its founders, with Ronnie Scruola being the biggest investor, and Upgrad has continued to be a capital-intensive business to this day. Their investors have poured $201 million into the company so far at a $1.2 billion valuation as of August of 2021, and a large chunk of this was actually spent on acquisitions. For example, their most recent acquisition was Insofe, an educational organization that focuses on data and analytics education programs. So now Upgrad is offering those same programs to their customers. Next up at number 3, we have cloud kitchen startup Rebel Foods. Now, this startup actually has a really fascinating story because it actually began with a single offline QSR restaurant in Pune called Fasos in 2003. The founders of this company, Jaideep Burman and Kalol Banerjee, invested 4 lakh rupees to start this business, and in the early days, they were actually spending more money on AC bills than they were earning from their roles. In fact, they were even borrowing from their wives' salaries to pay the salaries of their Fasos employees. In spite of this though, they opened a second location, this time without AC, and were able to stop bleeding money by the middle of 2004. Of course, even then, money was really tight, so Jaideep had to stop being a full-time entrepreneur and ended up going back to work. And he left 2 employees to run the business while he earned enough from his day job to pay them
income and keep his own family alive too. Later on, once things had stabilized, Jaideep and Kalo went to do their MBAs in France, leaving their 2 employees to run Fossos. But not surprisingly, these 2 employees wised up and realized that they could basically do this themselves as owners instead of as employees. So they told Jaideep and Kalo the same, and after a bit of back and forth, agreed to let Jaideep and Kalo keep the Fossos brand name as their own IP, but the company acting as a franchisee for that brand would not be owned by Jaideep and Kalo. It was only in 2010 that Jaideep decided to return to the Fossos brand and build it up into a national QSR chain. Kalo joined him in 2011, and today Fossos has 500 restaurants across 10 countries, making it the largest global Indian origin quick service restaurant, according to Business Standard. Of course, Fossos is just one small part of Rebel Foods, which was founded in 2014 and is today the parent company of Fossos along with 45 other brands. So like I said earlier, Rebel Foods is a cloud kitchen startup. They operate something called internet kitchens. Basically, these are kitchens specifically catering to people ordering food online using platforms like Swiggy or Zomato, and they have more than 4,000 of these online kitchens across 70 cities globally. Now, not surprisingly, this is a very capital-intensive business to be in, opening so many cloud kitchens around the world, and so for that, Rebel Foods investors have poured $534.5 million into the company, which was last valued at $1.4 billion in October of 2021. Moving into number 2 now, we have India's first ever crypto unicorn, CoinDCX. Founded by 2 friends, Niraj Khandelwal and Sumit Gupta in 2018, CoinDCX has had a rough journey. They launched their platform in April of 2018, just a couple of weeks after the RBI banned crypto transactions in India. Now, at that time, existing crypto exchanges like ZebPay had shut down their domestic operations, and others like CoinX had shut down completely. But because CoinDCX was founded in the midst of this uncertainty, they were able to adapt to the situation, focusing on strengthening their platform by adding new features and products in spite of the fact that they weren't seeing a lot of growth. By 2019, they had only managed to onboard 50,000 users, and so they made the decision to register a Singapore entity, PrimeStack Private Limited, as a way of ensuring their survival amidst the regulatory uncertainty that had caused their competitors to shut down. Then, in 2020, the RBI's crypto ban was overturned by the Supreme Court, and many of CoinDCX's competitors by this point had given up, or they were forced to revamp their defunct India-focused services and products. But CoinDCX, on the other hand, was ready with a very impressive catalog of products and services. Today, they're one of the leading crypto exchanges in India with more than 13 million users, and they've raised a total of $244 million from their investors at a $2 billion valuation as of August of 2021, to continue increasing their customer base and widening the adoption of cryptocurrency in India. And finally, coming in at number 1, we have health tech startup PharmEasy. 2 friends, Dharmil Sheth and Dawa Shah, started the company in 2015 with a really simple yet powerful goal: make healthcare completely doorstep deliverable in India. However, actually accomplishing this is a little bit more difficult in the pharmacy category than it is in other e-commerce product categories that we've talked about so far in this video, like furniture or beauty products, because pharmaceuticals require a prescription. They need to be sold by a pharmacy. Luckily, India is full of pharmacies, so the way that PharmEasy works is kind of like Swiggy or Zomato. Instead of stocking and selling pharmaceuticals themselves, PharmEasy acts as a middleman between pharmacies and customers. A customer orders prescription medicine on PharmEasy, PharmEasy verifies the authenticity of that prescription, and then they place an order at the nearest pharmacy for that customer. Following this, PharmEasy's delivery driver picks the medicine up and delivers it to the customer. And their offerings go beyond medicine too. They offer doorstep diagnostic tests, online consultations, and they also connect patients with hospitals for surgeries too. So far, PharmEasy's investors have poured $1.6 billion into the company so far at a $5.4 billion valuation as of October of 2021. And now PharmEasy is also planning to go public in 2022 at a valuation of between $7 and $8 billion. Alright, that was our list of the top 10 Mumbai startups. I really hope you enjoyed the video, and now just a couple of footnotes. First of all, Nykaa was not included in this video because they are a publicly traded company now. They don't qualify as a startup. We also didn't include Book My Show in this list because we consider them to be too old to qualify as a startup. They were founded back in 1999. And then one last thing is that this list was arranged in increasing order of valuation, just in case you were wondering. Oh, and leave a comment down below and let us know which city you'd like us to cover in a future top 10 video. All right, I will see you in the next one. जी जनाब, ये थे टॉप 10 स्टार्टअप्स इन मुंबई। इन मुंबई, सिर्फ मुंबई। जी हाँ। अच्छा, इतने बड़े बड़े। मुझे एक बात बताएं,
इसमें तो ज़्यादातर यूनिकॉर्न ही थे। जाहिर सी बात है कि कोई देखिए तो सबसे सोनिकॉर्न थे, कोई यूनिकॉर्न थे। तो हमने एक वीडियो देखी थी, इसमें पता नहीं कितने बताए गए थे, 100 से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। और ये मुझे लग रहा है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये दिन ब दिन। आपने मोदी जी की वीडियो नहीं देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हर 10 दिन के अंदर एक कंपनी यूनिकॉर्न बन रही है। इतनी तेज़ी से 100, 110, 100 तो कब से हो गए थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंश्योरेंस के हवाले से बात करना चाहूँगी, उसके बाद बिटकॉइन की भी बात करेंगे। आपने बोला कि वो बिटकॉइन पे मेरे ख्याल में शायद यूट्यूब पे थोड़ा सा इन मसला है मेरे ख्याल में, शायद। हाँ, आपको फील हो रहा था? मुझे फील नहीं होगा, मैंने सुना है कुछ वीडियो। तो मैं इंश्योरेंस के हवाले से बात करना चाहूँगी कि आपने देखा हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मतलब इंश्योरेंस को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है ना। अवेयरनेस, मेन चीज़ अवेयरनेस। और मैंने इंडिया में हर एक के बाद दूसरा ऐड देखे आप इंश्योरेंस के हवाले से। मोदी जी ने अपनी इंश्योरेंस करवा के रखी है, अमित जी को देखते हैं हम ऐड में इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो और बहुत सारी कंपनीज भी हैं इंश्योरेंस की, लेकिन जबकि मैं पाकिस्तान में देखती हूँ इस चीज़ का इतना रुझान नहीं है। टोटल ही 3 से 4 कंपनियाँ हैं, लेकिन ये बिज़नेस बड़ा बेहतरीन है। इसमें बहुत ही बड़े मतलब बड़ी बहुत बड़े में, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि लोगों की अवेयरनेस, लोगों की बहुत फेमस है। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक यूनिकॉर्न में वो आई थी, LIC भी आई थी ना। हमारे यहाँ पता क्या है, हमारे यहाँ देखिए एक बात है कि हमारे यहाँ शुरू से क्या चलता रहा है, ज़्यादातर लोगों के जहनों में, और लोग अपनी सेविंग को क्या करते हैं, इंश्योरेंस या इस तरह से करवाएं तो उससे ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने 2, 3, 4 साल तक आपने अगर लाख रुपए जमा करा दिया, 2000, 10,000, 20,000, 5,000, 10,000 करके पर मंथ की फ़िक्स होती है, इस तरह का भी होता है। तो आपने 4 लाख तक जमा करा दिया, आपको 15-20 साल बाद अगर आपने जमा कराए पैसे थोड़े थोड़े करके, आपको 4-5 लाख मिलता है, यानी डबल ट्रिपल। हाँ, मिसाल के तौर पर आपने 20 साल तक किसी की बच्ची की शादी के लिए 20 साल तक जमा करा दिए कि बच्ची अभी पैदा हुई है, अभी 3-4 साल की, मैंने इसकी इंश्योरेंस करा दी जहेज़ की, तो 4 लाख आपने जमा करा दिए 20 साल में, फ़र्ज़ करते हैं 5,000, 10,000 करके। तो 20 साल बाद आपको लाख रुपए जमा, 4 लाख जमा होने के बजाय 4 लाख के बदले में आपको 20 लाख देते हैं वो। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ, 5,000 रुपये पर मंथ या 10,000 या नहीं पर मंथ 5,000 के हिसाब से तो 4 लाख बिल्कुल नहीं होंगे 20 साल में ना। हाँ 20 साल में हाँ। ना, नहीं ना, 1,000 रुपये के हिसाब से होंगे मेरे हिसाब से तो। बहरहाल ये है कि पर मतलब आप कह रहे हैं कि अमाउंट बहुत थोड़ा लिया जाता है, 4 लाख मजीद एडिशनल अमाउंट डालकर उनको दे दिया जाता है 20 साल की इंश्योरेंस यानी कि 20 साल एक अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमेटियाँ ज़्यादा डालते हैं। कमेटी BC जो होती है वो जितनी डालो उतनी ही मिलती है। अच्छा, फिर दूसरी इंश्योरेंस की भी, अच्छा इंश्योरेंस के भी बहुत सारे तरीके कार हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, कोई कुछ आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी देते हैं, जैसे बाइक गाड़ी वगैरह हो गई। एक वो इंश्योरेंस होती है कि कोई नुकसान हो गया तो उसका भरपाई की जाती है, चेक एंड बैलेंस होता है। इसकी भी बड़ी टाइप्स हैं। बिल्कुल। और ये बिजनेस आपने बोला बहुत कमाल का है। अच्छा, एक ये स्टार्टअप हैं, ठीक है, बहुत सारे जो हमने देखे। ग्रोसरी का हमारे यहाँ पे मैंने सुना है कि एक ग्रोसरी का स्टार्टअप जो है वो फेल हो गया है उनका, एयरलिफ्ट का, ग्रोसरी का। अच्छा, क्या हुआ उनका? उनके बड़े बड़े वेयर हाउस थे और वहाँ से लोग, मतलब ये है कि उनका परसेंटेज एक तो बहुत कम होता है, बहुत ही माइनर होता है कंपनी का। यानी कि 300-400 रुपये की ग्रोसरी मंगाई है तो बाइकिया को जाते हैं, ड्राइवर राइडर को जाते हैं, और लोगों को बच जाते हैं, पेट्रोल का जाता है, तो कंपनी का मार्जिन बहुत कम होता है। तो मैंने ये सुना, पूरी डिटेल एक बंदा बता रहा था कि फेल हो गया। एयरलिफ्ट जो है एक बड़ी कंपनी थी जो ग्रोसरी का काम कर रही थी यहाँ पे, लेकिन वो पाकिस्तान में चल नहीं पाई। मतलब बड़ी हैरत की बात है कि कह रहे थे कि आवाम की वजह से, तो आवाम ने इस तरह से, यानी कि ऑनलाइन पे नहीं आना चाहती होगी, ऑनलाइन पे तो आना चाहती है, मंगवा भी रहे थे, लेकिन उनके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गए थे ना। मिसाल के तौर पर बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ग्रोसरी के लिए आपको खुद को अपने वेयर हाउस बनाने, मुझे एक बात समझ में, इन्वेस्टमेंट नहीं था उनके पास। इन्वेस्टमेंट भी था, लेकिन एक दफ़ा वेयर हाउस बना लिया तो बना लिया। देखिए आप छोटी मोटी चीज़ें मंगा रहे हैं ग्रोसरी, उससे उसको परसेंटेज नहीं बच रहा था, उनको बहुत ही माइनस था। ये कह सकते हैं कि लंबा अरसा चाहिए था उन्हें अर्न करने, शायद हो सकता है, और वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाया बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ग्रोसरी वाला आइडिया बहुत अच्छा है। अच्छा, मेडिसिन के हवाले से आप कह रहे थे कि मैंने मेडिसिन का तो मेरे जहन में था कि मेडिसिन का तो होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्पेशल मेडिसिन ही मंगवाएं। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि घर में लोग बीमार हैं, कोई है नहीं लाने वाला। अच्छा, मेडिसिन का एक मसला और है क्या? कि मेडिसिन अक्सर मिलती नहीं है। मतलब जो आपको मेडिसिन चाहिए वो अक्सर मिलती नहीं है।
ग्रोसरी, आलू, टमाटर, ये सब मिल जाएगा। ये तो आपने उधर से नहीं अच्छा वाला ढूंढा तो उधर से मिल गया। सही। आलू आलू ही है, टमाटर टमाटर ही है। लेकिन मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन भी होती है बाज़ दफ़ा पूरे शहर में बड़ा दूर जाना पड़ेगा, फलाना बड़ा मेडिकल है वहाँ से लानी पड़ेगी, तो मेडिसिन का एक इशू है। अच्छा, एक और बात है, हमारे यहाँ है वैसे लेकिन बहुत कम, मुझे तो एक ही पता है दवा को जिसके ऊपर आप ऑर्डर करते हो, और वो आप सही कह रहे हैं कि ये लोग ज़्यादा रखते नहीं है अपना। जैसे कि अगर फॉर सपोज आपने पैरासीटामोल या फिर पोस्टान ऑर्डर कर दी, तो जो उसके पैक के ऊपर बनते हैं जैसे 100 बनते हैं तो वो 120 की है, 130 की है, बस इससे ज़्यादा की नहीं। वही वाली बात है, इनका मार्जिन बहुत कम होता है। फिर राइडर से भिजवाते हैं, वो डिलीवरी करवाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने थोड़े दिनों पहले देखा बोरोफिन होती है ना, पिंक कलर की होती है, क्योंकि हमने बचपन से देखा वो पिंक की होती है। थोड़े दिनों पहले मामा की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो बोरोफिन लेकर आया भाई, तो आपको पता है वो वाइट कलर की हो चुकी है। बिल्कुल, वो चेंज हो चुकी है। अब हमारा दिल नहीं ठुकरा, क्योंकि एक तो डॉक्टर से पूछा नहीं, वो खुद से ही खा रहे थे। वो होता है ना कि फौरी तौर पे कुछ ले लें आप। अगर बोरोफिन लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ भी नहीं था, वो 2 टैबलेट्स थी ना, तो बस इतना सा था। अब उसके पीछे डिटेल्स भी नहीं दिख रही थी, अगर तो वो आखिर में वो नहीं खाई। अगर ब्रोफिन लिखा हुआ है, उसका फार्मूला है आइब्रोफिन, अगर वो फार्मूला वही है और ब्रोफिन लिखा हुआ है, तो कंपनियां नई कंपनियां थोड़ी सी लुक चेंज कर देती हैं। अच्छा, लेकिन वैसे मेडिकल वालों पे भरोसा कर सकते हैं, मतलब उन्होंने कह दिया कि ये बोरोफिन ही है। लोकल और दूसरी कंपनी की, जिस कंपनी में उनको थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, एक असल ब्रोफिन कंपनी जो पिंक है, तो उस पे इनको इतनी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। तो जब ये होलसेल मार्केट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे 3-4 आइटम दिए जाते हैं, ये भी ब्रोफिन है, ये भी ब्रोफिन है। ये पूरा डब्बा आपको 500 रुपये का आएगा, 1500 का बिकेगा। ये डब्बा ही आपको अच्छी कंपनी का डब्बा ही 1200 का आएगा, 15 का बिकेगा। तो 500 वाला डब्बा दे दूँ, 500 रुपये। असल में इन जो चीज़ों का ना, जो पैनाडोल, ब्रोफिन, इन चीज़ों का लोकल डब्बे भी चल जाते हैं, लोकल मेडिसिन भी चल जाती है। क्यों चल जाती हैं? क्योंकि लोगों ने नाम से ही लेनी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डॉक्टर ने लिखनी है वो लेनी है, कुछ चीज़ें लोग वैसे ही चलते फिरते मेडिकल से ले लेते हैं। इस वजह मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन में पैकेजिंग की होती है, तो उस वजह से अच्छा होता सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी जाहिर सी बात है, अच्छी कंपनी की चीज़ अच्छी होती है, बुरी कंपनी की बुरी होती है। आपको कौन सा स्टार्टअप बहुत ज़्यादा यूनिक लगा? एक तो आपको मेडिसिन का लगा, मेडिसिन का मेरे ध्यान में था, पानी फिर गया, आपको लगा था पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है और है बाकी। अच्छा, दूसरा एक तो स्कूल वाला बड़ा ज़बरदस्त था, एजुकेशन के हवाले से था, और एक था इन्होंने जो बनाया था मेकअप, बहुत मतलब है कि एक तरह से मेकअप का नायका था, पर्पल था, मेकअप के हवाले से जो था। ये जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि अच्छा, एक स्टार्टअप अगर हो जाए तो आप दूसरा स्टार्टअप ना करें, ये भी मतलब गलत बात है। उसकी वजह ये है कि अगर मेकअप की डिमांड इतनी ज़्यादा है, हर घर में हर लड़की, हर दूसरा बंदा, लड़की या लड़का जो भी है, कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, तो जो कंपनी उनको अच्छी सर्विस दे रही है, ऑटोमेटिकली लोग उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई, आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, तो लोग आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आपने टाइम कम रखा कि हम इतनी देर में आपको प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, आप मार्जिन कम रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जितने भी एप्लीकेशन वाले स्टार्टअप्स हैं, इन्होंने एक चीज़ और की है। हमारे यहाँ एक ही बहुत बड़ा चला है, करीम। शुरू में इन्होंने बहुत लोगों को सहूलत दी। एक ऑटो रिक्शा जितना रेंट लेते थे, ऑटो रिक्शे में आपको 200 रुपये 300 रुपये लगते थे, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। करीम आ गया एकदम से, करीम वाले भी इतने ही लेते थे। एसी में बैठ के आप जाते तो सब एक दूसरे से कहते थे, यार कितनी ज़बरदस्त चीज़ आ गई। आप रिक्शे के पैसों में कार में बैठ के जाते हो एसी में, लोग बड़ा भाई एप्लीकेशन डाउनलोड की, इसने उसको बताया, उसने करीम ने ऐड कम बनाए, करीम के ऐड इतने नहीं देखे हमने, लेकिन करीम को फेमस लोगों ने किया। स्टार्ट था उनकी अच्छी रही, स्टार्ट था उनका। अब करीम का ये हाल है कि आपके 1000, 1500, 1200 रुपये बिल बना देता है। अब करीम शाम 7 बजे, भाई क्या ये फेयर टाइम है, फलाना टाइम है, फिर ये बड़े घपले आ गए, मतलब शाम का टाइम है तो आपके। अच्छा, आपने लकी वन देखा? लकी वन। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब एक और एप्लीकेशन है कि ड्राइव इन, उन्होंने क्या सहूलत दे दिया वहाँ, उन्होंने ये कहा है कि ड्राइवर आपको कांटेक्ट करेगा, आप ड्राइवर से खुद ही तय कर लो पैसे। अच्छा, आप और ड्राइवर आपस में तय कर लो, 4-5 ऑप्शन बता रहा होगा आपको, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये आप नई बात कर रहे हैं कि फिक्स होता है, लेकिन मैंने जहाँ तक, क्योंकि उबर करीम हमने भी यूज़ किया है, तो मैंने देखा है कि वो राइड के हिसाब से लेते हैं, जो भी फेयर बनता है। हाँ, तो अब ज़्यादा बन रहा है। नहीं, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हुआ ये कि लकी वन जो मॉल है, आप वहाँ से लेकर और आपने मेरे घर तक का डिस्टेंस आपको आइडिया होगा कितने होने चाहिए। लेकिन आप बैठी कब थी? शाम में। नहीं, कितने अर्सा पहले? तकरीबन साल हो। हाँ, तो फ़र्क आ गया ना बहुत।
मिसाल के तौर पे पहले ये 200-300 में ले जाते थे, 400 में ले जाते थे, अब वो लकी वन से घर तक का सफ़र कम से कम 800-1000 रुपये ले लेंगे। मैं 1500 बता रही हूँ आपको। तो फिर तो मैं यही कह रही हूँ कि आप कह रही हैं कि किसी ज़माने में बड़ा सस्ता था, किसी ज़माने में सस्ता था लेकिन यानी कि महंगा। बहुत ही स्टार्टिंग की बात कर रहे या तो ये हैं। समझ वैसे नॉर्मली रिक्शे की निस्बत अगर आप उसकी बात करें तो वो राइड का, अच्छा वो बाकायदा आपको पैसे दिखा रहे होते हैं। हाँ कि ये आए हैं, ये आए हैं और आपको वो देना। अच्छा अगर 5 रुपये भी उसमें कम हो नहीं तो वो कहेंगे आप हमें ज़्यादा दे दीजिए, जैसे 100 रुपये आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, 95 रुपीज़ आपके ना उसमें चले जाएंगे आपके वॉलेट में डाल देंगे। ऐसा ही तो ये है कि बहुत ही शुरू में बहुत सस्ता था, फिर महंगा कर दिया, लेकिन अब तो मेरे हिसाब से सही है। अब ड्राइवर इनके नाम से एप्लीकेशन है, वो कह रहे हैं कि आप तय कर लो आपस में, मतलब आप डिस्काउंट करवा लो, उनसे कम करवा लो। नहीं मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना, मैं इतनी दूंगा, मैं इतनी दूंगी, वो कहते वो हैं रिक्शे वाला हिसाब किताब। हाँ लेकिन होगा एप्लीकेशन से, आपको कनेक्ट ड्राइवर एप्लीकेशन से करेगा, आप अपनी अमाउंट बता दो कि आप कितने देना चाह रहे हैं। मैं समझ गई, मतलब जैसे लोकली आप जाते हो, कोई रिक्शा पकड़ते हो, उससे बातचीत करते हो, वो कहता है इतने बनते हैं, फिर आप कहते हो मैं इतनी दूंगी और फिर हो जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ आपकी राइड के हिसाब से नहीं, पहले से ही तय हो जाएगा, तयशुदा होगा। क्योंकि करीम में ये था कि आप तो बैठ गए, पर आपके जेब में हैं कितने। एग्जैक्टली ये एक बड़ा मसला था। ये बड़ा रिस्की होता था, क्योंकि कभी आप सोचते हो 1000 रुपये में ठीक है जान छूट जाएगी, 1000 रुपये में हो जाएगा, नहीं हुआ। वो 1500 मांग रहे हैं या 2000 मांग रहे हैं, तो फिर आपकी बड़ी सुक्की हो जाती थी। तो ये स्टार्टअप जो होते हैं, ये अगर ट्रस्ट जीतते हैं तो उस ट्रस्ट पे रहें, तो इनकी बहुत बड़ी अच्छा कामयाबी। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है जो लॉस कर लिया उसको निकालते हैं फिर। ये भी आप सही कह सकते हैं कि जो शुरू में उन्होंने कमाया नहीं या लॉस किया, तो उसको बाद में तो कहते हैं वो कि हम मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी होती है, मार्केटिंग रेवेन्यू जनरेट कर लें जितना कर सकें। लेकिन स्टार्टअप के हवाले से देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेशुमार। एक छोटे छोटे बच्चों के स्टार्टअप देखे हमने। आपको एक और बात बताऊँ, अभी ये जो इन्होंने दिखाया है नायका का और पर्पल का, कि मेकअप भी है और प्लस फर्नीचर भी है। मतलब कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि यार आपको जहाँ से मेकअप मिलेगा उसी साइड से आपको फर्नीचर मिल सकता है, आपको ज्वेलरी मिल सकती है, आपको ड्रेस। अच्छा ड्रेस का ज्वेलरी का तो फिर भी है, लेकिन ऐसा होता है कि मेकअप वाले पेजेस पे ना, या मेकअप वाली जो साइट्स होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, कम होती हैं। 600 प्लस ब्रांड्स हैं, बड़ी बात। मतलब मैं कहूँगी सब बहुत कुछ है, बड़ी चीज़ है। आप वाकई एक ही जगह से आप सारी परचेजिंग कर लो। अच्छा ये सारे स्टार्टअप ये हमने और करना है कि जो मुंबई से सिर्फ स्टार्ट हुए, मतलब एक सिटी से, कमाल। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।